डिस्प्ले इंडिया न्यूज पर देखें विनीत कुमार मिश्र के साथ सदन में नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य। अध्यक्ष महोदय, ये सदन भारत के लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष की आवाज को भी इस सदन में जगह मिले। मुझे यकीन है कि आप हमें जनता की आवाज उठाने की इजाजत देंगे। सवाल ये नहीं है कि सदन कितनी सफलतापूर्वक चलता है, बल्कि सवाल ये है कि भारत की कितनी आवाजें यहाँ सुनी जाएंगी। अगर आप विपक्ष की आवाज को खामोश करके सदन को चलाते हैं तो यह लोकतांत्रिक होगा। देश की जनता उम्मीद करती है कि विपक्ष संविधान की रक्षा करे। हमें भरोसा है कि विपक्ष को जनता की आवाज उठाने की इजाजत देकर आप संविधान की रक्षा का धर्म निभाएंगे। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा। भानु मिश्रा, प्रधान संपादक, डिस्प्ले इंडिया न्यूज। The opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last year. Speaker sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution. I'd like to once again congratulate you, Speaker sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much.